देख अब स्टार्ट हुआ रहेगा बड़ा, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हुआ बड़ा, मैसेज करो बड़ा मुझे फटाफट। हाँ वेरी गुड, चलो तो बड़ा मुझे बताओ फटाफट कि क्या फिर से बड़ा मुझे 2025 में बड़ा वही 1 BHK 10 lakhs का मिलेगा? अच्छा 25 lakhs का मिलेगा। $45 lakhs का मिलेगा मैडम। थोड़ा आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है मैडम, वो सिर्फ बड़ा बढ़ने वाला ही है, वो कम नहीं हो सकता है मैडम। चलो अब ये तो बड़ा तुम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे बड़ा, गोल्ड, पेट्रोल, वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ द बड़ा प्रॉपर्टी, ऐसे बड़ा दूसरे भी बड़ा एग्जांपल्स है जिसके फ्लक्चुएटिंग बड़ा नेचर से, जिसके प्राइसेस, जिसके क्वांटिटीज, जिसके वेरी गुड मिताली, परफेक्ट एग्जांपल बड़ा, परफेक्ट एग्जांपल बड़ा। A share is a commodity which shows the highest fluctuation, which shows the highest fluctuation. How many of the people are interested in commodities? Company accounts पढ़ते ना, company accounts. तुम्हें पता है बड़ा कि शेयर इज अ कमोडिटी जिसके प्राइसेस बड़ा दिन में बड़ा कम से कम 3 बार चेंज हो जाते हैं। जब बड़ा मार्केट ओपन होता है वो टाइम पे बड़ा शेयर के प्राइसेस बड़ा कुछ और होते हैं। When बड़ा there is a peak time where the buyers and sellers they meet each other तो बड़ा वो टाइम पे प्राइस कुछ और होते हैं मैडम। एंड व्हेन द बड़ा मार्केट इज अबाउट टू क्लोज मैडम, मार्केट अराउंड 3:30 बड़ा क्लोज होता है, तो वो टाइम पे बड़ा प्राइसेस कुछ और होते हैं। है कि मैडम? तो बड़ा बाय यूजिंग index numbers, I repeat by using the index numbers, but it is possible that you can estimate the future trends, but it is possible that you can estimate the future trends आने वाले टाइम में शेयर का प्राइस बढ़ेगा कम होगा या it will remain a constant that can be known, that can be predicted with the help of index numbers. But याद रखना विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स
We can only बड़ा estimate, बड़ा we can predict the future trend बड़ा. We can predict our बड़ा future trend बड़ा. और वो prediction बड़ा कभी कभी वो wrong भी जा सकते हैं बड़ा. वो predictions बड़ा कभी कभी बड़ा wrong भी हो सकते हैं. हमेशा बड़ा वो predictions right हो गई उसका कोई बड़ा गारंटी नहीं है. अच्छा, जो दिन रात बड़ा शेयर के साथ जो खेलता है ना, दिन रात जो शेयर के साथ खेलता है, जिसको बड़ा हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर्स, जिसको बड़ा हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर्स, बड़ा वो लोग भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. वो लोग भी बड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बड़ा कि आने वाले टाइम में बड़ा शेयर का जो प्राइस है बड़ा वो इंक्रीज होगा या तो फिर बड़ा वो डिक्रीज होगा या फिर इट विल रिमेन कांस्टेंट बड़ा. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बड़ा तुम लोग को? और एस्टिमेशंस जो है बड़ा वो कभी कभी बड़ा फेल भी हो सकते हैं बड़ा. तो यहाँ पे तुम लोग ने देखा होगा बड़ा कि यहाँ पे जो हम लोग ने बड़ा कंपेरिजन जो किया है बड़ा, whether it can be the price of the gold, price of the petrol, value of the foreign exchange, value of the property. तो यहाँ पे जो भी हम लोग ने किया है बड़ा कंपैरिजन, वो कंपैरिजन बड़ा हम लोग ने किया है विद रिस्पेक्ट टू बड़ा अ टाइम पीरियड बड़ा. विद रिस्पेक्ट टू अवर with respect to our time period. And therefore, madam, in this given chapter, we are going to come across madam, with our madam, two time periods. Madam, and that two time periods, madam, it can be madam, number one, the current year, madam, and number two, madam, it can be the base year. Number one, madam, it can be the current year, madam, and number two, madam, it can be the base year, madam. Current year, base year, current year, base year, madam. So leave one line. And write down madam, the next heading to be as well. Some important notations, madam. Yeah, that's really good. Some important terms, madam, with their notations, madam. And now, madam, write down. Write down, madam. Current year,
Right on. Current year. Current year. Right on. The year for which मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा लिखते जाओ. The year for which the comparisons are to be done. The year for which the comparisons are to be done is called as is called as current year. The year for which the comparisons are to be done is called to be as a current year. Full stop. It is it is denoted by it is denoted by suffix one. Is denoted by suffix one. Suffix one means at the base one. सिंपल लैंग्वेज में समझ बड़ा. करंट ईयर का मतलब क्या होता है बड़ा, कि जो ईयर को बड़ा हम लोग को कंपेयर करना होता है बड़ा, जो ईयर को वो ईयर को बड़ा हम लोग को बोलता है करंट ईयर. जिसको बड़ा कंपेयर करना है, जिसको उसको बड़ा हम लोग बोलते हैं करंट ईयर. नेक्स्ट. देयर कम्स बड़ा बेस ईयर. बेस ईयर और वहां पे बड़ा नोट डाउन चालू कर दो. बेस ईयर मींस व्हाट? द ईयर with which the year with which the comparisons are to be done. The year with which the comparisons are to be done is called to be as is called to be as is called to be as base year is called to be as base year. Full stop. It is denoted by it is denoted by suffix zero. It is denoted by suffix zero.
is denoted by the suffix 0. Good. And now everyone will make a note. Here, the price of a commodity. Here, price of a commodity. It is denoted by using a small p. Is denoted by using the small p. Here, whereas here, the quantity is denoted by small q. बेटा तुम लोग उसे कैपिटल पी एंड बड़ा कैपिटल क्यू भी नहीं कर सकते हो. दे आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस. तुम लोग अपने मर्जी से बड़ा उसे चेंज नहीं कर सकते हो. प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर बेस ईयर. बेस ईयर. अब ये द प्राइस ऑफ द करंट ईयर will be denoted by P1. Price of the base year, it will be denoted by using P0. Quantity of the current year, it will be denoted by using Q1. Quantity of the base year, it is denoted by using Q0. Anything with respect to suffix 1, it is a current year. Anything with respect to suffix 0, it is a base year. चलो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टर्नओवर.
capital I madam. Capital I madam. A madam. Okay, what is capital I madam? Okay, capital I madam, is a simple index number or or current year price relative. Forward it is also called B as right. So price relative index. Total beta, there are three names. One is called to be as a simple index number, or beta it is called to be as a current year beta price relative, or beta it is called to be as a price price relative index. Right. No. Yeah. Now beta there comes beta I beta. Formula for I is P1 upon P0 multiplied by 100. I is equal to P1 upon beta P0 multiplied by 100 multiplied by 100. अब मुझे बताओ मैंने मल्टीप्लाइड बाय बड़ा 100 क्यों कहा? Because बड़ा index numbers they are बड़ा always expressed बड़ा in the terms of percentage, and since बड़ा they are expressed बड़ा in terms of percentage बड़ा, therefore the ratio बड़ा it has been multiplied by 100. चलो मुझे बताओ बड़ा what is P1? Is the price of the current year. What is P0 is the
Correct. It is the price of the base year. So next at number 4. Right on W. What is W? W क्या है? It is a weight assigned to the commodities. Weights assigned to the commodities. तो अब कौन मुझे बताएगा? Uses of weights बड़ा कौन बताएगा? The weights are being used for assigning the importance to the commodities. Weights are used for assigning the importance to the commodities. So the more will be the weights, more will be the importance. Less will be the weights. Less will be the importance. Next time, write down formula. W is equal to P0 into Q0. W is equal to P0 into Q0. P0 is the price of the base year and Q0 but it is the quantity of the base year. Correct. So and now after this, write down the heading as types of index numbers. But in this chapter, but we are going to study about the four types of index numbers and four types of index numbers which we are going to study. But they are price index number, quantity index number, value index number, and the cost of living index.
इंडेक्स नंबर हो। So next and better write down index numbers. They are broadly classified into four types, and they are write down. Number one, price index number. Number two, quantity index number. Number three, value index number. And number four, it is a cost of living index numbers. Cost of living index numbers. चलो तो ये जो टाइप्स है वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ।